Hello, my lovelies. My name is Sonam Rajput, and welcome back to my channel. So, in this video, we are going to create this rainbow kind of a look at the end of the video. But before that, we are going to try some viral hacks and see if they works or not. So let's go. But रुको अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो यार, कर लो and like it and share it with your friends and family. So without wasting any more time, let's jump into the video. So here we are without makeup and अभी मैंने अपने स्किन को प्रेप कर रखा है मेकअप के लिए. Then this is the first hack that I saw on Instagram. Ooh, cool, huh? So किया बट नो इश्यूज, हैक तो ट्राई करना ही था. तो यहाँ पे मैंने कॉन्टोर स्टिक ली है एंड आई एम ड्राइंग दी क्या कॉन्टोर लाइंस. And if in case any one of you wants to purchase any of the product that I've used in the video, so I'll mention the link below in the description box so you can check them as well. तो यहाँ पे मैंने कॉन्टोर अप्लाई कर लिया है एंड आई एम ब्लेंडिंग विद द स्पंज. दिस इज़ नॉट द डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, दिस इज़ अ स्पंज दैट आई परचेज्ड फ्रॉम Swarovski Cosmetic, I believe. It's the Instagram store. So yeah, we'll see the result in a moment. Sponge did the job very well because contour बहुत अच्छे से blend हो गया. But हैक की बारी थी तो मुझे ये हैक पसंद बिल्कुल भी नहीं आया क्योंकि इसने एक तो फाउंडेशन निकाल दी, दूसरा इसकी हार्श लाइंस शो हो रही थी एंड यू कैन सी. तो मतलब अगर आप इसको अप्लाई करते हो उसके बाद भी आपको ब्लेंड करना ही पड़ रहा है, तो इससे अच्छा कि आप ऐसे ही ब्लेंड कर लें जब आप अपनी कॉन्टोर लाइंस ड्रॉ करें, तो बेटर होगा ऐसे ही करने का. मुझे तो ये हैक अच्छा नहीं लगा, बट अगर आपने ट्राई करा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.
मुझे इस हैक से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट न्यू कलर लिया है और अपने कलर से इसको ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मुझे लगा था कि ये काम नहीं करेगा, इसने ओवरलाइन कर दिया है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैंने सोचा कि चलो इसको पूरा कर लेते हैं एंड देन देखते हैं कि ये कैसा वर्क किया है जब हम एप्लीकेशन कर लेते हैं। सेम ऐसे मैंने लोअर लिप पे भी अप्लाई किया है। और अब मैंने लाइन करने के बाद अपनी लिपस्टिक को अप्लाई किया है एंड गेस व्हाट, द हैक वाज ऑसम बोलते जिसको यहाँ पे मैंने गलती करी, बट यू विल सी द रिज़ल्ट्स इन अ बिट। ये बहुत अच्छा लग रहा था इन रियल। आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा इन द वीडियो, बट इन रियल इट वाज लुकिंग फैब। दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट हैक टिल नाउ। अगर आप में से कोई भी किसी भी हैक को ट्राई करेगा तो मुझे रिज़ल्ट ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो या सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग यार। मतलब इससे बहुत ज़्यादा प्लम्प से लग रहे थे लिप्स। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा ओवरलाइन करा था, बट इट वाज लुकिंग वेरी गुड। सो दिस इज़ द नेक्स्ट हैक। अच्छा, तो मैं पहले ही बता दूँ ये हैक वैसे वर्क करता है क्योंकि मैंने इसको पहले भी बहुत बार ट्राई किया है एंड आई हैव शेयर्ड अ रील ऑन माई इंस्टाग्राम। सो इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यू गाइज, प्लीज़ go ahead and follow me on Instagram. This is the Insta handle. So yeah, you can follow me for the latest updates. एंड येस, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस हैक इज़ लुकिंग। मुझे भी नहीं लगा था कि माइसेलर वाटर से इतना अच्छा आईलाइनर कोई ड्रॉ कर सकता है, वो भी कलर्ड आईलाइनर्स। तो अभी तक के सारे हैक्स वैसे मुझे अच्छे लगे सिवाय वो कॉन्टोर वाले के। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। दिस इज़ नॉट द हैक बट वी आर गोइंग टू ट्राई अ लुक। नियॉन पिंक कलर का शेड लिया है एंड इसको अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाया है एंड देन आई एम ब्लेंड। I am totally loving this look. Let me know which hack do you like the most and what do you guys think about this look. Till then, goodbye.